Yeah, fine. I can. Yeah, I can move forward. Yeah. So taking on the index, आणि 130 का कॉल नाही I think I'm getting two voices. 90. Okay. So, okay, fine. I'll take on the session forward. Now, taking on the index overviews, I think we have got all-time highs today. Congratulations, everyone. The market Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, it's all on uh, pura all-time high पे. It's on all-time highs, as well as it opened gap up and it tested the yesterday's candle highs and Nifty उसके ऊपर sustain कर रहा है. That is very fine. निफ्टी का जो कल का हाई था नियरली इट वाज 700 एंड इट्स सस्टेनिंग अबव तो स्टिल वी कैन मेक our moves to a buy on dip scenarios in nifty that is very positive for us but for the bank nifty side okay I think it's a mix up yeah now you can get it right so fine. So what we have a Nifty support right now. I already said that Nifty strong here right now just because it's sustaining above the yesterday's high level, which was 700. So we have a conviction over Nifty it can move on to gradually and slowly to 750 levels, which I said yesterday. Also, it's a resistance. It can move up to there. एंड कल के दिन एक बार टेस्ट किया था 700 की आसपास एक बार निफ्टी अटका था एंड इट गेव अ स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग इट वाज हेल्दी and now it's giving another follow on so we can go for buy on dips in nifty that is a positive stance for us and talking about the bank nifty if I'll say to bank nifty में we are positive still एंड बट अभी इमीडिएट ट्रेड लेना इतना मुश्किल है जस्ट बिकॉज कि आज का जो गैप अप था गैप अप होने के बाद नाउ इट हैज टेस्टेड इट्स यस्टरडेज कैंडल्स हाई और वो वहीं पे सस्टेन कर रहा है एंड इट्स बिलो द यस्टरडेज हाई तो वी हैव टू सी कि एक बार 48,840 एक बार वापस निकलता है यहाँ से 60 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉलो ऑन मिलता है ऊपर की तरफ और ऊपर टिकता है तो वी आर गुड टू गो विद we are good to go with buy on dips again in bank nifty so wait and watch for bank nifty but nifty you can go for buy on dips कर सकते हैं as well as if you want to go bank nifty में अगर buy on dips करना है and uh, rather going on buy on dips you can go for bull calls so at the money I think you can take it as a bull call from there so 48,800 it's working right there so 48,800 का कॉल लेके 900 का या फिर 49,000 का बेच सकते हैं इट विल बी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली इट विल बी फेवरेबल एंड इट कैन ओके सो यहाँ से एक फॉलो ऑन बैंक निफ्टी में वी आर सीइंग कि एक बार अच्छा निकल जाए what we have levels right 48,850 right so 48,850 is our level and इसके ऊपर एक बार निकलते ही एक अच्छा फॉलो ऑन मिलेगा तो इफ यू वांट टू गो फॉर अ क्लियर पुट बाय साइड इन ऑप्शन साइड कॉल लेना है तो 850 निकलने के बाद यू कैन टेक इट राइट सो दिस इज अवर कॉल फॉर टुडे एंड if you want to go for Nifty, so Nifty is purely bullish. That is fine. Nifty में अच्छा है momentum and make sure कि एक बार Nifty का जो support है ना 45 sorry 22,500 का majorly support लेके चलिएगा on a very wider range. If you want to trade on a daily basis, तो take at least 650 का जो support है 22,650 should be taken as a immediate support or you can take it as a trading support. ठीक है एंड फॉर द वीकली सपोर्ट इफ आई से 22,500 एंड 400 इज अ रेंज फॉर वीकली सपोर्ट ठीक है अपसाइड इट्स कैप्ड एट 750 22,750 एंड 900 अपसाइड राइट सो बैंक निफ्टी आई विल टेक ऑन बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है नियरली अबाउट 48,250 के आसपास है बट इफ यू वांट टू ट्रेड टुडे सो टुडे के लिए आज का लिए ट्रेड जो सपोर्ट है नियरली इट्स 100 पॉइंट यहाँ से नीचे का है विच इज नियरली अबाउट 48,570 48,570 ट्रेडिंग सपोर्ट है कल का जो ब्रेक इवन है जो कल का कैंडल्स का ब्रेक इवन है दैट इज अ सपोर्ट फॉर टुडेज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में दैट इज फाइन
एंड अपसाइड इज कैप्ड एट 49,250. एक बार देख सकते हो कि एक बार फॉलो ऑन मिला ना आज के दिन, एंड इफ बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबव 850, 850 के ऊपर जाता है और वापस अच्छा बुलिश स्टांस बना सकता है, एंड इट कैन गो अप टू 49,250 आल्सो. On the weekly side, upside can be kept at 49,500. It's a wider range. So talking about the Nifty OIs, as you can see, Nifty PCR is 1.29. That is quite fine, and we can take it as a bullish stance. That's fine. And India VIX, if I'll see, it's one of the comfort zone what we have created at 11.6 range. तो 11.6 के आसपास जो रेंज है, it is making a comfort zone over there. And the fear and greed meter, it denotes as a fear and greed meter. If it is on a higher note, then it denotes as a fear greed meter, but it's on a lower range, so no need to fear about a very volatile market right now. So it can be a slowly and gradual move coming in index. As well as talking on the quantitative side, so FIs also have sold nearly 1.2 lakh puts, so they are also bullish in the stance. And the index are quite bullish from the market makers as well. And this is all up to, okay, Anuj, I need to hang up the screen. I think it's hanging, so I'll take on the without a screen. Yeah, so now let's take on the technical pick of the day. I'll take the technical pick of the day. And what we have the technical pick, it's DLF. We are looking for follow on in DLF. एंड आई सी के एक अच्छा रैली मिल सकता है टू 980 लेवल्स, एंड द नोशनल फिगर 1000 इज द मार्क वेयर वी कैन सी कि यहाँ से एक अच्छा एक अच्छा फॉलो ऑन मिल सकता है यहाँ से. 980 एंड 1000 इज द लेवल वेयर इज द नोशनल फिगर इज सेटअप, एंड उसके ऊपर एक बहुत अच्छा तेजी भी मिल सकता है. बट एज ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस आई कैन से कि ऊपर का टारगेट 980 के आसपास यू कैन सी. कीपिंग सपोर्ट नियर टू 890 के आसपास, इट विल बी फाइन एंड वेल, राइट. सो टेकिंग ऑन दिस, टेक्निकली इट हैज क्रिएटेड एक चैनल ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकअप दिया था इसने, अच्छा निकाला था चैनल का हाइज, एंड इट्स सस्टेनिंग अबव द चैनल हाइज, एंड तो डीएलएफ इज पॉजिटिव. Now let's go forward for the scripts which I am looking for as a bullish stance, and the sectors also I will cover it over there. So these are the stocks where we can, I think, Indigo. What we are going for Indigo, crude oil में भी थोड़ा सा जो रैली आया था, it's going to somewhat cooling down over this. तो raw material इनका mainly they have the raw material which cost higher when the crude oil prices is on higher side. So Indigo you can focus on as a positivity, and ऊपर का resistance जो है 3800 के आसपास है, and we can look forward कि 3800 के आसपास आ सकता है. We have a positive trend. Technically it's all positive, and the support you can take it for 3500, right. NTPC also I said in my last session, which is quite positive. Nifty CPSE also, it's NSE CPSE index is also positive, so you can focus on CPSE stocks. So NTPC, Hind Copper and NTPC, these are my preferred picks which have positive trend, as well as their technical is also positive. For a weekly view as well as monthly view they're positive. So taking on the resistance side of NTPC, it's 380, एक बार देख सकते हैं वहां पे आ सकता है. एंड हिंद कॉपर का एक अपसाइड टारगेट विद द फॉलो ऑन कैन बी सीन इज 340 के आसपास. यू कैन सी हिंद कॉपर वेयर द टारगेट लाइज, एज वेल एज हिंद कॉपर का जो सपोर्ट है 322, यू कैन टेक इट एट 322, एंड हायर साइड 340. एंड ऑल्सो मंडे को मैंने बोला था हुडको, आई सेड हुडको, that was one of the positive. We are taking a positive view according to the technically positivity stance in this. And Hudco is positive right now. It's near to about 200, 209, 200 के आसपास चल रहा है. बट आई सी कि 200 से right now we can take it a support of 200, and 230 is a eminent target over coming, right. So फिन फोकस, आज का फिन निफ्टी एक्सपायरी है. वी आर टेकिंग फिन फोकस इन फोकस, एंड आई सेड कि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी थोड़ा सा अभी लाई कर रहा है ऊपर. ओपन एंड हाई उसका सेम है. तो rather being stuck at taking a trade right now, I need some time to evaluate if the momentum is being uh,
there or not. So let me check over the momentum if we can make it a trade right now. So फिर निफ्टी आई थिंक वी शुड वेट और यू कैन टेक इट 21,700 के आसपास का कॉल ले सकते हैं आप लोग. 21,700 के आसपास का इज द स्ट्राइक राइट नाउ एंड 21,700 वी कैन रिलाई ऑन. And what the price is going on right now, let me check over this. Yeah, okay, the option price right now it's going with 23 के आसपास. I think 23 it's going on. Yeah, it's 23 right now. And in the mean side, you can focus on 21,650 also. 21,650 का भी call आप ले सकते हो. It is working on 42 or 43 के levels. You can take it a support of nearly 22 or 23 के आसपास का support ले सकते हो, and you can rely on coming upside at 68 or 70. So that can be a trade for today. And even if the price of this strike gets stuck into a range, you can go for buy on dips also. ये भी अच्छा stance है, you can take it buy on dips. So this is our fin focus as of now, and I'll take on another. Let's go for Q&A right now. I already covered stock picks. Yeah, I think the index and the sectors are being pending. I'll cover that also. So the index, what we are keeping in focus for today, it's near about. Yeah, reality एक अच्छा sector है which is in focus today, and IT also you can focus for today. एक IT में अच्छा upside मिला है and technically it is also very positive. Reality very good upside has been seen and the follow in today is also eminent, and we can rely on the uh, reality index. And the stock focus which we have capped over is Oberoi Reality and Godrej Properties. These are the quality stocks what we are keeping in focus. And talking about the took that positivity in reality. Now let's talk upon IT. So what stocks you can focus on IT? It's L&T Technology. It's positive, and the trend is very positive. And emphasis also, it's a technically positive right now. It has created a very good technically upside, and we have a support of nearly 2450 के आसपास इसका support है, and we are keeping it as a support at 2450, and we can long it from there. As well as Infosys is also positive, and we are seeing कि एक अच्छा upside and follow on मिल सकता है. These are the stocks and the index what we have kept in a focus. एंड निफ्टी का इंडिया डिजिटल इज इंडेक्स एक बहुत ये भी एक फोकस में है जिसमें टुडे इट्स गेनिंग सम लाइमलाइट ओवर इज, तो we can focus on that also. As well as national aluminum, that is also in focus, and right now it's 182, and what we are looking forward कि एक 190 के ऊपर देख सकते हैं इसको स्टॉक को. 182, that is a preferred stock but we can take it for intraday as well as a week view also. So national aluminum that is on 182, I'll repeat again, and the target in the meantime we can take it 189 or 94 का एक range है, you can take it from there, keeping as a support of 176 or 174 on the downside. So this is all I have been done. Let's take on some queries right now. uh, नायका आई थिंक सो कि टेक्निकली थोड़ा सा वीक हो गया है. नायका, आई टेक ऑन नायका. ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा अवॉइडेड है ये स्टॉक अभी राइट नाउ, जस्ट बिकॉज इट्स इन अ very tug of war between the bull side or the bear side. So I will say कि if there is a some upside or bullish stance coming, मतलब थोड़ा सा 2-3% का आसपास का अगर रिटर्न मिलता है और द बाउंस मिलता है तो यू कैन मेक एन एग्जिट. आई थिंक द इमीडिएट फॉलो ऑन थोड़ा सा बाउंस के लिए देख सकते हैं बट नॉट वेरी एमिनेंट, एंड आई वोंट सी कि बहुत बड़ा रैली मिल सकता है, तो मेक एन एग्जिट ऑन अ हायर
बाउंस, मतलब थोड़ा हाई रेंज या फिर बाउंस, स्मॉल बाउंस. सॉरी, डिक्सन टेक. ओके, so it's an IT, right? I already said it's a positive trend in ITs, and what we are taking as a trade in ITs and Dixon trade, it's the same. Technically positive है, and कल का जो आज का क्लोजिंग अगर 7750 के ऊपर हो जाए तो दैट विल बी वेल एंड गुड फॉर अनदर फॉलो ऑन कमिंग फॉर 3 to 4%. तो व्हाट वी कैन सी इन डिक्सन टेक्नोलॉजी इज 7748 का जो एक लेवल है उसके ऊपर आज का क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज थोड़ा सा स्टक हो जाएगा इन अ कंसोलिडेशन रेंज. सो दैट इज द क्वेरी फॉर डिक्सन टेक. So I can see a query coming from PSU sector. Yeah, those PSU sectors may I already said they are in a very bullish trend, as well as we are taking positive stance and the buy on dip scenarios in PSUs. And कल के दिन हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, एज यू कैन सी एक वीक से बहुत अच्छा रैली मिला था. तो इट्स क्वाइट, मतलब थोड़ा लाजमी है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए. आई वोंट सी मच प्रॉफिट बुकिंग, बट कल का दिन काफी था फॉर द प्रॉफिट बुकिंग. यू कैन अगेन सी बाय ऑन डिप सिनेरियो कमिंग इन PSU banks. So this is the positive outlook for PSUs. Yeah. Next query I can take on. So it's Rail Vikas Nigam. I can see a query coming from Rail Vikas Nigam. So RVNL. So RVNL is technically on a consolidation range इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि there is a gap up का जो range stuck हुआ था, it was near to about 281 से 257 258 के आसपास का जो range था. It is a range where अगर 281 निकालता है then you can see another upside coming, but it's 10% का पूरा range अगर हम लोग बना के चलेंगे तो it will not be able to not be tradable for this security. But for a shorter note, if you want to trade, तो 2671 एक बार निकालता है तो यू कैन टेक अ ट्रेड एंड सी के 281 भी आ सकता है. 10 रुपए का मूव यू कैन ट्राई ऑन दिस स्टॉक, कीपिंग सपोर्ट नियर टू अबाउट 254 253 के आसपास. यू कैन टेक ऑन द सपोर्ट. जियो फाइनेंस. सो जियो फाइनेंस आई थिंक बहुत अच्छा एक अपसाइड दिया है जियो फाइनेंस ने. सो एक अच्छा टेक्निकल पॉजिटिव भी है इसका. चार्ट चार्ट पैटर्न इज वेरी पॉजिटिव राइट नाउ. एक कल का जो कैंडल है 8 अप्रैल का कल का जो कैंडल है, इट हैज क्रिएटेड अ हाई ऑफ नियरली 378, एंड व्हाट वी सी के 378 पे एक बार स्टक किया है, एंड व्हाट वी सी इज अ डार्क क्लाउड. बट ठीक है, आई थिंक 278 एक बार वापस 378 एक बार वापस निकलता है, वी कैन सी अनदर रैलिंग कमिंग एंड फॉर द टारगेट ऑफ 400 प्लस. तो कीप अ स्ट्रिक्ट सपोर्ट नियर टू अबाउट, यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ 357 और 358, ये रेंज है, इसके आसपास टेक अ स्ट्रिक्ट सपोर्ट. Okay, Canara Bank, I think it's not full information provided, just because the time value is also important when we take a call. So you need to mention कि when you took the call was yesterday or the day after yesterday, day before yesterday. I think if 350, sorry, Anuj, what you said, 650 call. So if you have taken 650 call the day before yesterday, then you might be in a loss, and थोड़ा सा डिके भी देखने को मिला होगा कल के दिन. बट इफ आई से फॉर अगर आपने कल के डे के एंड में लिया है तो यू माइट गेट सम पेनी, थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट या पेनी होगा, बट टेक स्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफ 606. 606 का एक सपोर्ट लेके चलिएगा कैनरा बैंक में. वी आर पॉजिटिव इन PSU बैंक्स एज वेल एज इन पॉजिटिव इन कैनरा बैंक, बट ऑप्शन एंड ऑप्शन डिकेज आर समथिंग the another world story. So if you want to take in cash, that is perfectly fine, but
I think you should take 606 support in Canara Bank in cash side, and the upside you can take up. You can keep a theory of keeping an option. आधा का stop loss लेके you can take a target of 100% or 150% if you are aggressive trader. So that's my view on this. So I got okay, Havels, right. So I think you must have got a write up from मोतीलाल ओसवाल ठंडा ठंडा गोल गोल वाला जो हम लोगों ने रिपोर्ट लिखा था. So Havels is one of the pick from that report also. We are taking a seasonality report. We have positivity in Havels. You can take it for a very short period and एक momentum आता है तो you can make an exit just because in the past history they have a stance कि अपने सीजनैलिटी से आने से पहले दे गो ऑन हाइज एंड सीजनैलिटी के मिड तक दे गो ऑन प्रॉफिट बुकिंग. सो डू द सेम स्टंस if you want to take a view अप्रैल एंड तक you can make an exit and you can see a small bounce coming in these stocks. I also get some queries on metals. So right now metals are also positive. I also said Tata Steel is one of the preferred pick what we have taken as a metal pick. That is too positive in technicals. एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है टेक्निकल में. So Tata Steel is also a very good pick for us and we can see a target coming near to about 177. एक अपसाइड मंथली व्यू के आसपास का if I'll take a view 177 and upside can be seen taking support near to about 161. सिर्फ 8 रुपए का सपोर्ट 7 या 6 रुपए का सपोर्ट यू कैन टेक एंड लुक फॉरवर्ड फॉर टारगेट ऑफ 179 और 180 प्लस का देख सकते हैं. एज वेल एज हिंडाल्को ऑल्सो आई कैन सी हिंडाल्को इज ऑल्सो पॉजिटिव. हिंडाल्को का टेक्निकल सिफाइल से कि एक जो 4 तारीख का जो 4 अप्रैल का जो कैंडल बनाया है ना इट हैज 4 तारीख का जो कैंडल बनाया है it has created some highs over 590. 590 के पास एक बार हाइज बनाया है एंड उसके बीच उसका एक रेसिस्टेंस है एंड नाउ वी सी अनदर रेसिस्टेंस कमिंग एट 608. सो एक बार आप देख सकते हो कि 608 भी आ सकता है इन हिंडाल्को. कीपिंग मेजर सपोर्ट आपको सपोर्ट अगर रखना है तो यू कैन टेक अ स्ट्रिक्ट सपोर्ट एट 571. या आई सी क्वेरी कमिंग के निफ्टी का भी ट्रेड बताइए. सो निफ्टी में इफ यू वांट टू ट्रेड यू कैन गो फॉर अ ट्रेड इन बुल कॉल्स. तो राइट नाउ अगर 22,740 चल रहा है निफ्टी सो यू कैन टेक इट 22,750 का कॉल लेके या फिर 700 का कॉल लेके यू कैन टेक अ गैप ऑफ 100 रुपीज एंड सेल अबव रेंज. ओटीएम कॉल्स आप सेल कर सकते हो ऊपर का 22,850 और अगर आप 22,750 बाई कर रहे हो तो यू कैन सेल 22,850 as well as if you are aggressive so you can go for 22,700 call buy and 22,800 call sell. So this is our stance क्योंकि इतना हाईज पे चलने के बाद इतना फॉलो ऑन एकदम शॉर्ट में नहीं दे सकता है. so it will be slowly and gradually तो you can take better bull call लेके आप काम कर सकते हो. as well as if you want to take calls तो you can take calls in 22,700. 22,700 का calls ले सकते हो and you can exit in a momentum. yeah. Yeah, Vedanta, I think it's a metal. Okay, that's fine for us. Last when I say the technical is positive and very positive candle is being created and एक बहुत अच्छा सपोर्ट है. बहुत अच्छे सपोर्ट से एक बार मूव ऑन किया है उन्होंने हायर रेंज एंड इफ यू वांट टू टेक अ सपोर्ट नियर टू अबाउट 200 319 के आसपास आप सपोर्ट लेके चल सकते हो या 315 से 319 का अगर रेंज है जहां पर एक बाय रेंज है नीचे की तरफ दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड अपसाइड रेसिस्टेंस इज कैप्ड एट अभी रेसिस्टेंस इफ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. आई थिंक दिस इज नो नॉट ऑल टाइम हाई. तो एक अपसाइड जो रेसिस्टेंस है 340 के आसपास है. आई स्ट्रांगली फील कि जो पैटर्न बनाया है इट कैन मूव अप टू 340 लेवल्स. दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड 340 इज अ रेसिस्टेंस. इट माइट गेट स्टक ऑन देयर. अगर 340 को गैप अप से निकालता है
So it will be a very good follow on coming to 360 levels. So this is also positive, Vedanta. You can take on this. Yeah. Okay. Is there any chilling vacation coming in near time? Is there any chilling vacation coming in near time? Right. So this seasonality and the temperature coming right now is itself making a conviction over bias. So you can take on the positivity in this, and just let me take on the technicals over this. So technically it is positive, right? Positive है, अच्छा है, and you can take on the support of 1785. 1785 का support लेके चलेंगे तो you can see coming 1890s का level देख सकते हो यहाँ से 3% के upside देख सकते हो. Take a step strict stop loss आप लेके चलिएगा over there, and 1890 के आसपास आप देख सकते हो, and the another resistance coming is nearly 1906. एक बार 1906 और 1890 निकालता है, then another uh, bull side or the another follow on can be seen above for 1940 or 2000 levels, but it needs to cross 1890 and 1906. It's a range over there, so it's positive. Nice, nice. That's great. The I taking on the queries on this thing made a mess over the call which I gave. Yeah, it gave up to 11 or 12 points according to what I saw before. But if some, I can see people mentioning they got 17 points. That was fine. That's very nice. And yesterday also we gave a call. We got a profit in that. That's positive, and we I'm glad ki everyone got a profit today as well in the morning. So it's a happy Gudi Padwa and a happy profit today in the morning itself. uh, so all from my side. Anything we can cover on the stock side or the queries of the people? या आई सी अशोक लेलैंड ऑल्सो. अशोक लेलैंड का एक क्वेरी आ रहा है, एंड आई सी अशोक लेलैंड भी ना एक टेक्निकली पॉजिटिव स्टांस. इट हैज क्रिएटेड अ टेक्निकली स्टांस, पॉजिटिव स्टांस, एंड एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ, एक बहुत शॉर्ट डब्ल्यू पैटर्न के साथ निकला है, एंड वी सी अनदर टारगेट कमिंग 186 178 के ऊपर अगर निकलता है ना तो वी कैन सी 186 कमिंग इन नियर टर्म. सो दैट इज पॉजिटिव फॉर Ashok Leyland, क्योंकि autos are positive and the outlook for yearly viewer is positive for autos and Ashok Leyland also. I also got a query of IREDA. So it's Indian renewable energy what we are focusing, and the most capex has been set up in IREDA. एंड नीचे के लेवल से 124 के लेवल से एक बहुत अच्छा अपसाइड मिला है टू 170 लेवल्स. अपसाइड वाज 183 तक भी आया था. तो आई सॉ अ वेरी पॉजिटिव स्टांस इन दिस, बट जो आज का कैंडल है इट नीड्स टू क्लोज अबव 167 का लेवल जो है, या 167 का लेवल्स एक क्रूशियल जोन है जहां पे वी कैन डिसाइड कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगा ना तो वी कैन टेक अप बाय साइड एंड बुलिश स्टांस लेके चल सकते हैं. एंड इफ इट breaks down from 167 levels, then we can थोड़ा सा, if you have already from 125 or 130 के level, so you can book profit of 50% of your portfolio. So that can be fine in this stock. If you want to take risk in 50% of the stocks, then you can look forward to the target of 199 or 200 coming in again. So this is my view on Areda. That's it from my side.
The Patel are is asking sir 2:30 फिर आ जाना. Okay. uh, okay, fine. Thanks a lot for your comments. Thank you everyone. That's it from my side. Happy Gudi Parva again, and enjoy your day. Happy Finifty expiry.